हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 15 एंड द चैप्टर नेम इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस चैप्टर में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, आपको यहाँ पर स्टार्टर एक्टिविटी दी गई है। नोटिस द फॉर्म ऑफ टू सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर टू पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको नोटिस करना है इनका क्या फॉर्म है सेंटेंसेस का। फर्स्ट वन, गीता met सीमा इन द मार्केट। गीता टोल्ड समथिंग टू सीमा। फिर उसके बाद आप बी में देख सकते हो, बी पार्ट में, मॉम गीता टोल्ड मी शी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो आप देख सकते हो कि कैसे फर्स्ट वाले पार्ट में आपको एकदम डायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंसेस दिए गए हैं, स्पीच दी गई है, और फिर सेकंड वाले फॉर्म में उसी स्पीच को इनडायरेक्ट फॉर्म में बोल दिया गया है। सो आप देख सकते हो स्टूडेंट कि कैसे सेकंड वाले फिगर में जो सीमा है वो अपनी मम्मी को बता रही है, तो यानी कि वो डायरेक्ट फॉर्म में ही बता रही है, यानी कि उन्होंने इसमें क्या यूज किया है, इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। There are two ways in which we can report what someone has said. तो यहाँ पर दो तरीके हैं जिसमें हम रिपोर्ट कर सकते हैं जब क्या किसी ने बोला है। ओके, we can either reproduce the actual words of a speaker, हम या तो वही वर्ड बोले, ठीक है, और can give the gist of the speaker's words in our own word, या फिर हम कुछ ऐसे झलक दे स्पीकर के शब्दों का, ठीक है, अपने ही शब्दों में। ओके, जैसे कि रुबीना टोल्ड हिम आई एम हैप्पी, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। ओके, रुबीना टोल्ड हिम दैट शी वाज हैप्पी, ये इनडायरेक्ट हो गई। ठीक है, नाउ इन द बॉक्स यू कैन सी ओवर हियर, अ सेंटेंस इज सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर रिप्रोड्यूस्ड। मतलब सेंटेंस जो है उसको हम डायरेक्ट स्पीच में तब बोलते हैं जब एग्जैक्ट वर्ड जो है स्पीकर के वो बोले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, a sentence is said to be in indirect speech when the meaning of the speaker's word is conveyed in the reporter's word. एक सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बोलते हैं जब स्पीकर के जो वर्ड है वो कन्वे किए जाते हैं रिपोर्टर के ही शब्दों में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, when the exact words of the speaker are reproduced, the entire speech is put within inverted commas. This speech is called reported speech. जब एग्जैक्ट वर्ड्स जो है स्पीकर के वो रिप्रोड्यूस किए जाते हैं तो एंटायर स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमा में लगा देते हैं और इस स्पीच को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, नेक्स्ट वन इज, द वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब वो वर्ब जो इंट्रोड्यूस करता है रिपोर्टेड स्पीच को उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, यूजुअली अ कॉमा और अ कॉलन सेपरेट्स द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टेड वर्ब। अब ज्यादातर क्या होता है, कॉमा या फिर जो कॉलन होता है वो सेपरेट कर देता है रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड वर्ब से। ठीक है, जैसे कि शी सेड आई सॉ हिम, तो सेड यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ठीक है, और आई सॉ हिम आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है, द डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज केप्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में पुट किया जाता है। अ कॉमा सेपरेट्स द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कॉमा जो है वो सेपरेट करता है डायरेक्ट स्पीच को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से। नेक्स्ट थिंग इज, in the direct speech the first word within the inverted comma begins with a capital letter. जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, in the indirect speech a conjunction if necessary is used to join the reported speech with the rest of the sentences. अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, जो कंजंक्शन है वो ज्वाइन करा जाता है रिपोर्टेड स्पीच के साथ विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, मेघा सेड दैट शी वाज हैप्पी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब कुछ ऐसे रूल्स है जिसमें हम चेंज करते हैं, जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो वो हमें फॉलो करने चाहिए। व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नेसेसरी चेंजेस। कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जैसे कि द टेंस ऑफ द वर्ब हम चेंज करते हैं, द पर्सनल प्रोनाउन हम चेंज करते हैं, द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस ये हम चेंज करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी द फर्स्ट वन, दैट इज चेंजेस ऑफ टेंस। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1, when the reporting verb is in the present tense or future tense, the tense of the verb is in the reported speech and remain unchanged.
जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो उसका जो टेंस होगा उस वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच में वो अनचेंज रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट में आपको दे रखा है ही सेज टू मी वी विल प्ले बैडमिंटन, इनडायरेक्ट में है ही टेल्स मी दैट वी विल प्ले बैडमिंटन। नेक्स्ट वन डायरेक्ट में मेघा विल से आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, इनडायरेक्ट में मेघा विल से दैट शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट थिंग डायरेक्ट में राज सेज आई लव माई पेरेंट्स, indirect में Raj says that he loves his parents. Okay. Now rule number 2 आपको दिया है if the reporting verb is in the past tense, अगर reporting verb जो है past tense में है, the tense of the verb in the reported speech is changed into the corresponding past tense. अब जो tense है verb का reported speech में वो change हो जाएगा corresponding past tense में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट बिकम्स सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बन जाएगा। जैसे कि डायरेक्ट में आप देख सकते हो शी सेड आई लाइक टू सिंग, इनडायरेक्ट में शी सेड दैट शी लाइक टू सिंग। नेक्स्ट वन डायरेक्ट दीपा सेड रिया टेल्स लाइज, इनडायरेक्ट दीपा सेड दैट रिया टोल्ड लाइज। नेक्स्ट वन डायरेक्ट शी सेड आई डोंट वेस्ट टाइम, इनडायरेक्ट शी सेड दैट शी डिडंट वेस्ट टाइम। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बिकम पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा इनडायरेक्ट में। जैसे कि डायरेक्ट में आपको दिया है ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, इनडायरेक्ट ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट वन डायरेक्ट द टीचर सेड द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, इनडायरेक्ट द टीचर सेड दैट द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके। नेक्स्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। जैसे कि डायरेक्ट में शी सेड आई हैव डन माय होमवर्क, इनडायरेक्ट शी सेड दैट शी हैड डन हर होमवर्क। नेक्स्ट वन डायरेक्ट ही सेड राज हैज वॉन अ प्राइज, इनडायरेक्ट ही सेड दैट राज हैड वॉन अ प्राइज। नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, जैसे कि डायरेक्ट में आपको दिया है ही सेड आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर द लास्ट 2 hours, indirect he said that he had been waiting there for the last 2 hours. Next one direct, he said I have been playing a game, indirect he said that he had been playing a game. Now next is simple past becomes past perfect, simple past जो है past perfect बन जाएगा। डायरेक्ट में आपको दिया है he said I bought a new video game, indirect he said that he had bought a new video game. Next one direct, they said we went to a market, इनडायरेक्ट में होगा they said that they had gone to a market. Okay. Now next is past continuous becomes past perfect continuous, past continuous जो है past perfect continuous बन जाएगा। जैसे कि डायरेक्ट में है he said I was waiting for you, indirect he said that he had been waiting for you. Next one direct, he said the dog was barking, indirect he said that the dog had been barking. Okay. Now next is past perfect and past perfect continuous, no change, कोई change नहीं होगा। Direct he said I had passed the exam, indirect he said that he had passed the exam. Okay, direct they said we had won the game, indirect they said that they had won the game. Okay. Now student, अब आपको यहाँ पर दिया है exception to rule. If the reported speech contains some universal truth or habitual fact, then the simple present is reported. Then the simple present in reported speech remains unchanged. अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कंटेन कर रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ को या हैबिचुअल फैक्ट को, तो उसमें जो सिंपल प्रेजेंट है रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट में आपको दिया है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, इनडायरेक्ट में द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। Next one direct, he said God is everywhere, indirect he said that God is everywhere. Okay. Now next thing is change modal auxiliaries. आप देख सकते हो डायरेक्ट में the coach said you will do practice every day, indirect the coach said that you would do practice every day. Next one direct, he said I shall try to help her, indirect he said that he should try to help her. Next one direct, she said Manvi can run fast, indirect she said that Manvi could run fast. Next one direct, they said children may wear suits, indirect they said that children might wear suits. Okay. So आप देख सकते हो स्टूडेंट, आपको यहाँ बॉक्स में दिया गया है कुछ वर्ड्स, जैसे कि shall हो जाएगा should, will, would, can, could. Okay. can जो है स्टूडेंट वो क्या बन जाएगा could. ठीक है। Now the next topic is change of pronouns.
Now the next topic is change of pronouns. Pronouns of the reported speech are changed according to the pronouns of the reporting verb. Pronouns जो है reported speech का वो change होता है according to the pronoun of the reporting verb. Okay, जैसे कि आपको rule number 1 दिया है, first person pronouns of the reported speech will be changed according to the subject of the reporting verb. जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का उसमें वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिव वर्ब. फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया है शी सेज टू मी आई एम अ गर्ल, इनडायरेक्ट में हो जाएगा शी टेल्स मी दैट शी इज अ गर्ल. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है डायरेक्ट में, ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट, इनडायरेक्ट ही सेड दैट ही शुड डू हिज बेस्ट. ओके, next one direct, I said my parents take care of me, indirect I said that my parents took care of me. Okay, now rule number 2 is second person pronoun of the reported speech will be changed according to pronouns of the reporting verb. जो second person pronoun है of the reported speech वो change हो जाएगा according to the pronoun of the reporting verb. ओके, जैसे कि आपको डायरेक्ट में दिया है he says to me you are a good boy, indirect में हो जाएगा he tells me that I am a good boy. नेक्स्ट वन डायरेक्ट में राहुल सेड टू रोहित यू हैव नॉट ईटन योर ब्रेकफास्ट, इनडायरेक्ट में हो जाएगा राहुल टोल्ड रोहित दैट ही हैड नॉट ईटन हिज ब्रेकफास्ट. ओके, नाउ रूल नंबर 3 इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज. फॉर एग्जाम्पल जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उस रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज नहीं होगा. जैसे कि डायरेक्ट में आपको दिया है आई से शी इज अ गुड गर्ल, इनडायरेक्ट में आई से दैट शी इज अ गुड गर्ल. नेक्स्ट वन डायरेक्ट ही सेड टू मी ही इज एंग्री, इनडायरेक्ट ही टोल्ड मी दैट ही वाज एंग्री. नेक्स्ट वन डायरेक्ट ही सेड टू मी आई एम नॉट एट फॉल्ट, इनडायरेक्ट ही टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट एट फॉल्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट आपको इस बॉक्स में कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं. जैसे कि आप देख सकते हो वर्ब सेड इन द रिपोर्टेड स्पीच विल रिमेन अनचेंज. जो वर्ब सेड है रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा रहेगा. नेक्स्ट थिंग इज वर्ब सेड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड. जो वर्ब सेड टू है वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में. ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस. So here you can see words showing nearness in time and place are changed into words showing distance. For example, note the following table. तो यहाँ पर words change हुए हैं जब हम direct से indirect में change करते हैं. जैसे कि now जो है वो बन जाएगा then. Now becomes then. This becomes that. These becomes those. Here becomes there. Ago becomes before. Thus becomes so. Today becomes that day. Yesterday becomes the previous day. Tomorrow becomes the next day. Last night becomes the previous night. Okay. Now look at the following sentences. First one, direct. They've said, we are happy here now. Indirect one, they've said that they were happy there then. Okay. Then direct, she said, my uncle may visit us tomorrow. Indirect, she said that her uncle might visit them the next day. Next one direct, he said I shall discuss this topic next week. Indirect, he said that he would discuss that topic the next week. Next one direct, Pragya said today is a cold day. Indirect, Pragya said that the day was a cold day. Okay. Now let's move into the next topic, that is statements. All the examples and the exercises taken so far consist only of statement. वो सिर्फ statement ही consist करते हैं. So the rules should be pretty clear. Still, let us sum up them again. Okay, sum them up again. So here you can see आपको यहाँ पर एक box दिख रहा है. So the first thing is changing statements into indirect. कैसे हम statement को indirect में change कर सकते हैं? So the first point is the reporting verb said is usually changed into told if it is followed by an object. तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट है वो चेंज हो जाता है टोल्ड में अगर वो फॉलो करा गया है बाय एन ऑब्जेक्ट. इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इट इज लेफ्ट अनचेंज. अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वैसे का वैसा रहेगा. दैट इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन. दैट को हम कंजंक्शन के फॉर्म में यूज करेंगे. टेंस, प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम और प्लेस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑलरेडी स्टेटेड. ठीक है, तो टेंस, प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव जो है, शब्द जो है, ठीक है, वर्ड्स जो है वो डिनोट कर रहे हैं नियरनेस ऑफ टाइम को, प्लेसेस को. ठीक है, विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स विच ऑलरेडी स्टेटेड ओवर देयर. ओके,
Some other words that can be used as a reporting verb in place of said are, कुछ और words आप use कर सकते हो जैसे कि add, complain, promise, admit, deny, remark, answer, explain, remind, argue, object, reply, assure, point out. ठीक है, किसकी जगह में? said की जगह में. Now here you can see Rahul said to me I shall return your money within a week. So यहाँ पर Rahul told या फिर Rahul assured me that he would return my money within a week. Now next is I said to my friend yesterday you won the first prize. I told my friend that the previous day he had won the first prize. Now next is there is no need to follow the rules mechanically. The only important points are You should be faithful to what the speaker said. मतलब हमें एकदम faithful होना चाहिए जो speaker ने बोला है. Don't leave out, don't add, don't distort. Leave out नहीं करना है, add नहीं करना है, distort नहीं करना है. Your reporting should not be clumsy. Reporting जो है वो clumsy नहीं होनी चाहिए. जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है, she said to me, I promise you that I shall bring a nice gift for you. Don't write, she told me that she promised me that she would bring a nice gift for me. तो ये wrong कहलाया जाएगा. It is much better to write. इससे सही है कि हम लिखें she promised to bring a nice gift for me. Okay? तो promised आएगा यहाँ पर क्योंकि वहां पर उसने promise किया था. ठीक है? So now student यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. ठीक है? Now the next topic is interrogative sentences. There can be two types of question. दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं. एक है WH questions, that is question beginning with question words. क्वेश्चन जो शुरू हो रहे क्वेश्चन वर्ड से ही जैसे कि what, who, when, where, etc. Next is yes/no questions, that is question that begins with auxiliary verb. जो auxiliary verb से start होते हैं जैसे कि is, am, are, was, were, have, has, had, etc. Okay, no conjunction is used when the question is in the direct speech start with WH words. अब कोई भी conjunction use नहीं होता है जब question जो है direct speech में वो start होता है WH word से. जैसे कि for example आपको direct में दिया है he said to me where have you been all these days. Indirect में हो जाएगा he asked me where I had been all those days. Next one direct में she said to me how are you. Indirect में she asked me how I was. नेक्स्ट वन डायरेक्ट में she said to me what are you doing. इनडायरेक्ट में हो जाएगा she asked me what I was doing. ओके, डायरेक्ट में है he said to me why have you beaten him. इनडायरेक्ट में he asked me why I had beaten him. ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कंजंक्शन if or whether is used when the question is direct speech. When the question in direct speech start with yes or no questions. जब क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहे हो, yes और no क्वेश्चन से हो रहे हो. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में Lucy said to Nami are you going to school today. Indirect Lucy asked Nami if she was going to school that day. Next one direct he said to me have you done your homework. Indirect he asked me if I had done my homework. Next one direct she said to me will you attend my birthday party. Indirect she asked me if I would attend her birthday party. Next one direct the teacher said to me do you play tennis. Then indirect the teacher asked me whether I played tennis. Okay, now student यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट भी दिए गए हैं जैसे कि the introductory verb is changed to ask. जो introductory verb है वो चेंज हो गया ask में, enquire, demand और some other word having a similar meaning. ठीक है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड एंड अ फुल स्टॉप इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है और फुल स्टॉप यूज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में. नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस. The reporting verb said to is changed according to the mood or sense of the sentence given in the reported speech. ठीक है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मूड के फॉर्म में. स्टडी द फॉलोइंग टेबल. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब शोज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिखा रहा है सेट टू, ऑर्डर को रिफर किया है, सेट टू रिक्वेस्ट, सेट टू एडवाइज और चेंज इनटू ऑर्डर्ड. रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर हो जाएगा ये. ठीक है, रिक्वेस्ट हो जाएगा रिक्वेस्टेड, चेंज इनटू दैट फॉर्म. एडवाइज चेंज इनटू एडवाइज्ड, डू नॉट चेंज इनटू फॉरबिड. ओके, So in imperative sentence the subject is mostly omitted. subject को हटा दिया जाता है. So the reported speech begin with a verb. तो reported speech जो है verb से शुरू होता है. Next, while changing the speech to is used in spite of any conjunction.
Next point is, while changing the speech, to is used in spite of any conjunction when the inverted commas are removed. तो जब हम चेंज करते हैं स्पीच को तो टू को हम यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ एनी कोई भी कंजंक्शन, ठीक है, व्हेन द इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव, जब इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है, जैसे कि आप डायरेक्ट में देख सकते हो, द टीचर सेड गेट आउट फ्रॉम द क्लास राज, इन डायरेक्ट द टीचर ऑर्डर्ड राज टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास. डायरेक्ट वन, द मदर सेड टू हर सन वर्क हार्ड, इनडायरेक्ट में हो जाएगा द मदर एडवाइज्ड हर सन टू वर्क हार्ड. नेक्स्ट वन, डायरेक्ट, द टीचर सेड डू नॉट मेक नॉइज स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट वन, द टीचर फॉरबेड, डू नॉट की जगह हम फॉरबेड यूज करेंगे, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग नॉइज. नेक्स्ट वन, डायरेक्ट, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, इनडायरेक्ट ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स. नाउ स्टूडेंट, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. Now the next topic is exclamatory and wish. In reporting an exclamation in the indirect speech, the introductory verb is changed into exclaim, praise, cry, wish, bless or some other similar verb. ठीक है, तो इन वर्ड्स में चेंज हो जाता है exclamatory फॉर्म में. ठीक है, the words showing exclamation such as alas, hooray, how, hey, etc. are omitted. इनको हटा दिया जाता है. The sign of exclamation is omitted. साइन जो है वो भी हटा दिया जाता है. The exclamatory sentence is changed into a statement before it is converted into the indirect speech. तो उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बदल दिया जाता है. ठीक है, the sigh of exclamation is omitted. जो sigh होता है exclamation का वो भी omit कर दिया जाता है. जैसे कि आपको डायरेक्ट में दिया है, द ऑफिसर सेड ब्रावो, विक्ट्री इज आर्स, इनडायरेक्ट द ऑफिसर एक्सक्लेम्ड दैट द विक्ट्री वाज देयर्स. तो एक्सक्लेम्ड वर्ड हमें लिखना है यहाँ पर. नेक्स्ट वन, डायरेक्ट में द ट्रैवलर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. सो इनडायरेक्ट में द ट्रैवलर्स एक्सक्लेम्ड दैट द बिल्डिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल. ओके, सो इसी के बेसिस में आपको स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.